Hello aspirants, welcome to Career Launcher UPSC CSAT YouTube channel. Today we're gonna talk about UPSC Notification 2020-25. So forms are out for UPSC Civil Service Examination and the last date to fill up the form is 11th of February 2025. आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करने वाले हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल और इस साल के नोटिफिकेशन में। 5 बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जहां पे आपको सारे चेंजेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विल गोना गिव इट टू यू। So first important thing is that last date to fill up the form is 11th of February 2025 and the forms are being filled till 6 PM on 11th of February. So in case आप लेट हो जाते हो और आप लास्ट डेट को फॉर्म फिल कर रहे हो तो याद रखिएगा 6 PM शाम के 6 बजे तक ही फॉर्म फिल होंगे 11th of February को। But you should not wait till 11th of February because UPSC follows first filled first allot policy for your center allocation for your examination. So अगर आप जल्दी फिल करेंगे तो आपका प्रेफर्ड सेंटर मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो अपना फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए यूपीएससी एग्जाम का पहले आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा एंड देन आप उसका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करेंगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द यूपीएससी नोटिफिकेशन इज दैट देयर इज अ मॉडिफिकेशन विंडो ऑल्सो। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने कोई गलती कर दी, आपको कुछ करेक्शन करना है, आपको कोई अपनी डिटेल चेंज करनी है, तो आफ्टर 11th ऑफ फरवरी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, उसके बाद 12 तारीख से 12th फरवरी से 18 फरवरी तक यू विल गेट अ विंडो ऑफ 7 days to make changes, to modify your details in the application form. So there is a modification window also, and this modification window will also be open for OTR profile change. One time registration profile में भी अगर आपको कोई change करना है तो वो change भी applicable होगा, वो भी आप कर सकते हैं again 18th तक। After that, let's discuss the first important change that has happened in UPSC notification 2025. The change one is that number of services. Last year the number of services was 21. This year it is 23. So what happened? So in 2019 government have decided to merge the Indian Railway Management Services. So what happened is there used to be 3 different services which have been merged into one. Now they have again demerged it. So previously till last year notification it was only one service, Indian Railway Management Service combined. Now it has been divided into 3 different services for traffic, personnel and accounts. That's why from 21 now we have 23 services in this year's notification. Change 2. The second big change that has happened is that the number of vacancies are 979 this year, which is lower than last 2 years vacancy. We have around about 1056 vacancies in 2024 and 1105 vacancies in 2023. So now it is reduced to 979. Out of those 979 vacancies, 38 vacancies are reserved for person with benchmark disability category. So that's about the second change, which is the number of vacancies. The third change that has happened, and it is very important, please listen very carefully. ये change important है आपके लिए जानना कि आपका जो documentation है अबाउट योर कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो पहले प्रीलिम्स के बाद आपको फिल करना होता था DF1 में, वो अभी आपको प्रीलिम्स से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अभी फिल कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेशन अपने जो भी सर्टिफिकेशन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसी टाइम मांगे जा रहे हैं आपको इस बार। तो आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर योर SC ST OBC EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड, एवरीथिंग यू हैव टू सबमिट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। अभी जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं प्रीलिम से पहले अप्लाई करने के लिए, उसी टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है जो पिछले साल आपको प्रीलिम्स के बाद सबमिट करना होता था। ऑल्सो कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर टेकिंग कैडर प्रेफरेंसेस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि पहले जो कैडर प्रेफरेंस आपसे मेंस के एग्जाम के बाद पूछी जाती थी, वो कैडर प्रेफरेंस अब आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद पूछी जा रही है।
सो आपका कैडर प्रेफरेंस भी आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के विद इन 10 days भरना है. So you have to be very clear about what is service preference, what is cadre preference, what I have to fill. You cannot wait previously. जो आपको मेंस के बाद भरना होता था रिजल्ट के बाद, वो आपको अभी मेंशन करना है. Okay, so that is two big change, documentation and cadre preferences. कैडर प्रेफरेंस अभी आपको प्रीलिम्स के बाद ही मेंशन करनी है, जो डीएफ फॉर्म होगा 1 वाला, एंड आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको चाहिएगा. Now this is important. A lot of student makes very minor mistakes. तो वो छोटी छोटी mistakes ना हो, उसके लिए I have made sure I will give you some important informations from the notification. One thing very important, photograph. 10 days से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए. आपका नाम और आपका डेट on which the photograph was taken should be clearly mentioned on the photograph. Also, if you have a beard in the photograph, you have to make sure that you will not cut that beard at the time of any stage of the examination, whether prelims, mains or interview, otherwise you will be barred. So this is if your photo is with spectacles, you have to go with spectacles at the time of the examination. If your photo is with mustaches, you should make sure that you will not cut that before the examination. So this is important. You have to make sure your appearance which is there in your photograph at the time of form submission, it has to remain the same throughout the examination. Allotment of center, as I told you, UPSC follow first apply, first allot. So the faster you apply, the earlier you apply, there are more chances that you will get the preferred center of your choice for your examination, prelims examination. Another important thing, that you will also get a modification window after your main examination. You will get a window of 15 days where you can change few part of your application form. क्या आप change कर सकते हैं? So you can change your address, you can change your higher education qualification, you can change your achievement in different fields. You can change your employment detail, service experience or detail of the services allocated on the basis of previous. अगर आपका civil service examination 2024 में कुछ selection हो जाता है, उससे related कोई information वो आप update कर सकते हैं after your main examination. ठीक है, तो you will get a 15 days window from the date of declaration of your test, declaration of your result of the written part of main examination. So मेन एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के 15 डेज की आपको विंडो, रिजल्ट आने के बाद 15 डेज की विंडो मिलेगी जहां पे आप ये चीजें अपना क्वालिफिकेशन सारा आप अपना. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अपीयरिंग, इफ यू हैव शोन ग्रेजुएट अपीयरिंग, ग्रेजुएशन अपीयरिंग, फाइनल ईयर अपीयरिंग एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फिलिंग, बाय दिस टाइम you should have your degree and you have to change your higher education qualification in the form that I am graduate now. Okay, and you also need to submit your degree. You have to upload your degree also at this point in time. Another thing that you need to be very careful about is that UPSC asks for service preferences. Okay, so you have to make sure that you understand that whatever service preferences that you fill out there, that will be the final preferences. For example, if you have not filled up a particular service and your rank is way below and you are eligible for that particular service but not for the services that you have shown as preference, you will not get this service even you are eligible as per your rank, because you have not put about that service, you have not mentioned that service in the service preference window. So just read this. In case preference for none of the services indicated, the candidate will not be considered for service allocation. So in case you qualify for one of the service but that particular service is not in your service preference list, you will not be allocated that service. So be very careful, fill up as many services in the service preference as you can. Age criteria. Another important thing, a lot of students ask that how do UPSC calculate 21 year of age or 32? How do they calculate minimum qualification age and maximum qualification age? So they calculate on the basis of 1st of August
of that particular year of the exam year, that is 2025. That means the candidate must have been born not earlier than 2nd August 1993 and not later than 1st August 2004. So anybody who have been born between 2nd August 1993 and 1st August 2004 is eligible to give the UPSC 2025 Civil Service Examination as per the age criteria. Obviously, there are certain age relaxation which will be applicable out here based on your category that you can calculate. Now, fourth big change, okay, this is about date of birth. Now, you have to be very, very careful when you fill your date of birth in the online application form. अगर आपने date of birth गलत fill कर दी तो there is no way now you can change that. Previously, by doing correspondence with UPSC, there used to be a line that you can still change it by doing correspondence with UPSC, and on your request they usually change it if you have filled it incorrectly. But now they have clearly written that once a date of birth has been submitted by the candidate and entered in the record of the commission, no change will be allowed subsequently for any other examination, ठीक है, on any ground whatsoever. So एक बार आपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, उसके बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है उसमें. सो डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से हमको फिल करनी है. Another very important change is about the eligibility criteria of the education qualification. As you know, the graduation is compulsory to give the UPSC Civil Service Examination. But अगर आप graduate फाइनल ईयर अपीयरिंग है ग्रेजुएशन में तो भी आप इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं. बट एक इंपॉर्टेंट चेंज इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जो यूपीएससी ने इस साल किया है, दैट टिल 2024 टिल लास्ट ईयर अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप सेलेक्ट हो गए, मेंस एग्जामिनेशन देने से पहले आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होती थी. ओके और इन केस किसी वजह से आपको अपने कॉलेज से वो डिग्री नहीं मिली या कुछ लेट हो गए तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. दिस ईयर दे हैव गिवन अ रिलैक्सेशन दैट अगर ऐसा होता है तो आप मेंस एग्जामिनेशन में सेट कर पाएंगे एंड बिफोर इंटरव्यू मेंस के बाद आप अपना क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दैट इज योर डिग्री यू कैन सबमिट. सो दैट इज वन बिग चेंज एंड वेरी पॉजिटिव चेंज बाय द यूपीएससी. Another important thing that a lot of students ask कि attempt कब count होता है, because there are limited number of attempt. Okay, so 6 attempts you can give. So when an attempt will be counted? क्या मैं form fill कर देता हूँ तब attempt count होता है या examination? So this is important. An attempt at a preliminary examination. अगर आप prelims के exam write करते हैं तो आपका attempt count हो जाता है. आप दोनों पेपर में से एक भी राइट करते हैं तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है. बट अगर आप खाली फॉर्म फिल करते हैं, इफ यू ओनली फिल अप द फॉर्म एंड यू डू नॉट अपीयर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन योर अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड. ओके, नाउ लास्ट few basic updates, few basic information when you fill up the form fill करने के लिए कुछ basic information. So पहली बात, इस बार जो फॉर्म है वो 4 पार्ट में है. पहला OTR प्रोफाइल आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपको फिल करना होगा. अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो दैट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज सबसे पहले यू हैव टू फिल अप द पार्ट 1 व्हिच इज द OTR प्रोफाइल, देन पार्ट 2 व्हिच इज द एप्लीकेशन फॉर्म, देन पार्ट 3 व्हिच इज द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, and then your part 4 which is fees, photograph, signature upload and examination center selection. फी फॉर्म फिल करने की 100 रुपीज है. इट इज एग्जाम्प्टेड फॉर फीमेल कैंडिडेट, ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फॉर SC ST and person with benchmark disability. For OBC and EWS candidate the fee is there, you have to pay that 100 rupees fees. You need to ensure before you fill up the form आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन्ड फॉर्म में होना चाहिए in JPG format and file should not exceed 300 KB for each of them, okay, and should not be less than 20 KB. So you should have a scanned copy of your photograph and signature and ये file sizes आपको maintain करके रखना है before filling up the form, ठीक है. And obviously you should have a photo ID card and you can fill up the form till 11th of February till 6 PM. So that is all about we had for UPSC notification 2025. Just please do like this
video in case you love the information that's been provided. If you find that information useful, do share this video with your fellow aspirant and do subscribe to the channel. This particular channel has been specifically formed for UPSC Civil Service Examination CSAT paper. So we will be focusing a lot on CSAT examination. We'll be coming up with lot of interesting, engaging videos on CSAT exam. So if you are a UPSC aspirant, do follow this channel because this is the only channel that you need for your UPSC Civil Services CSAT preparation. Happy learning!